Hello students, how are you? Hope you're doing well. Now the question is, with the help of a diagram, explain the principle of a device which changes a low AC voltage into high voltage. Reduce the expression for the ratio of secondary voltage to the primary voltage in terms of the ratio of number of turns of the primary and the secondary winding. For an ideal transformer, obtain the ratio of primary and secondary currents in terms of the ratio of voltages in the secondary and primary coils. So the question is about the device known as transformer. We have to write down the principle of the device. We have to draw the diagram of the device. We have to find out the relationship between the EMF at the primary and secondary side and the number of turns. We have to derive the relationship between the currents and voltages at the primary and secondary sides respectively. So यहाँ पे जो प्रॉब्लम दी गई है इसमें हमें ट्रांसफार्मर के बारे में एक्सप्लेन करना है, उसका डायग्राम ड्रॉ करना है, उसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो बताना है, साथ के साथ हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है प्राइमरी और सेकेंडरी साइड की वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स के बीच में, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स के बीच में। साथ के साथ हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड वोल्टेज विद द प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड्स करंट। तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमें दी गई है। स्टेप बाय स्टेप इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द डिवाइस। सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखेंगे और उसके बाद हम जो डिफरेंट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने को कहे गए हैं वो हम जो है एस्टेब्लिश करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज द डायग्राम। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ ट्रांसफार्मर। This winding is known as the primary winding. This is the primary winding, and then there is a secondary winding. So this is the secondary winding, and these are connected through this particular core material. The primary input is applied here and the secondary side's output is obtained here. So we can say that the primary side, the applied EMF is E sub P, and the secondary side generated EMF is E sub S. The number of turns in the primary side is N sub P, and the number of turns in the secondary side is N sub S. The current flowing in the primary side is I sub P, and the current produced in the secondary side is basically I sub S. So the working principle on which the transformer is based is known as the mutual induction. It works on the principle of mutual induction. Mutual induction. So by the mutual induction, there is a generation of the EMF in the secondary side. First of all, when there is a change in the EMF of the primary side, because it is used for the AC signal. So when the AC signal is applied, which is a kind of a variable signal, there is a change in the magnetic flux, and this particular change in flux is linked with the winding of the secondary side through this core. And when there is a change in flux in the secondary side, then according to Faraday's law of electromagnetic induction, there is a generation of the EMF in the secondary side. So this is the basic principle of the transformer which we have to explain. Then we know that the flux is given by N A B. This is given by N A B. So we can say that the rate of change of flux, the rate of change of flux in the input side is d phi by dt of where phi is phi sub p, where phi sub p is the flux corresponding to the primary side. So this become N sub p into A into B dB by dt. Similarly, we can write down d by dt of phi sub s is equal to N sub s A dB by dt. This is the rate of change of flux. Now this rate of change of flux corresponding to the primary side, this is E sub p.
This is E sub P, that is the EMF in the primary side. With a negative sign also, there is a negative sign. Similarly, E sub S is equal to negative of N sub S A dV by dt. We write it down in this particular manner. Now, we take the ratio. We take the ratio of E sub P and this equation and this equation. So, we get E sub S upon E sub P is equal to minus N sub S A dV by dt upon minus N sub P A dV by dt. Now these two terms cancels and we get this value as N sub S upon N sub P. So we can say that E sub S upon E sub P is equal to N sub S upon N sub P. So this is the relationship between the EMF and the number of turns. You can easily see that the EMF is directly proportional to the number of turns. So if the number of turns of the secondary side is greater than the number of turns of the primary side, then we can say that E sub S is greater than E sub P. It means that the EMF generated in the secondary side is more than the EMF at the primary side. So this is known as the step-up transformer. This is known as the step-up transformer. Now, if the primary side turns are more as compared to the secondary side, then we can easily see that the primary voltage is more as compared to the secondary voltage. So this is the step-down transformer. Step-down transformer. So there are two kind of transformers. In the first part of the question, it is also asked name the device. So first of all, we have to write down the name of the device also, which is the transformer. Now we have to find out the relationship between the current and voltages. This is the ratio of voltage in terms of the ratio of the number of turns. Now we know that the input side power is equal to output side power. The power remains same if the transformer is ideal. If you assume the transformer to be ideal, then the input side power should be equal to output side power. Input side power is given by the input side voltage, which is the EMF of the primary side multiplied by the current in the primary side. So this must be equal to the output at the secondary side, which is E sub S multiplied by I sub S, which is the current in the secondary side. So from here we can write it down as E sub S upon E sub P is equal to I sub P upon I sub S. Now we also know that E sub S upon E sub P is equal to N sub S upon N sub P. So in this manner we can say that this is equal to N sub S upon N sub P. So in this way we have related all three parameters like the voltage, current and the number of turns. So we can easily see that the EMF is directly proportional to the number of turns, whereas the current is inversely proportional to the number of turns. So it means that if the number of turns are large, the current is smaller at that particular side, and vice versa. Means if the number of turns are less in a particular side, it means that the current is more in that particular side. So this is the whole description of the device known as the transformer. So इसको मैं एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमें उस डिवाइस का नाम बताना है कि जिससे कि हम एक साइड के वोल्टेज को कन्वर्ट कर सकते हैं ज़्यादा या कम में। एक पर्टिकुलर इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हम एसी, तो उसको हम उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। बढ़ाने वाले डिवाइस को हम कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर और घटाने वाले डिवाइस को हम कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले हमें नेम लिखना है उस डिवाइस का, विच इज ट्रांसफार्मर। उसके बाद हमें डायग्राम बनाना है। डायग्राम में हमें प्राइमरी सेकेंडरी साइड शो करनी है, हमें नंबर ऑफ टर्न्स शो करने हैं प्राइमरी सेकेंडरी साइड, हमें ईएमएफ जो है शो करना है ई सब एस एंड ई सब पी, और साथ के साथ हमें करंट भी शो करनी है दोनों साइड्स में। फिर उसके बाद हमें उस वर्किंग प्रिंसिपल बताना है, किस प्रिंसिपल बेस्ड है। तो इसका जो प्रिंसिपल है मेनली वो है म्यूचुअल इंडक्शन। ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फिर उसके बाद हमें एक्सप्रेशन पता है, द फ्लक्स इज रिलेटेड टू द एरिया of the coil and the magnetic field and the number of turns of the coil। यहाँ पे हमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हेल्प से हम ईएमएफ निकाल सकते हैं। ईएमएफ इज बेसिकली द नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। सो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड का ईएमएफ हम निकाल सकते हैं।
प्राइमरी साइड के ईएमएफ के लिए हम लेंगे माइनस डी फाई सब पी बाई डी टी। यहाँ पे फाई सब पी का मतलब ये है नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी साइड मल्टीप्लाइड बाई एरिया, एंड जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो डी बी बाई डी टी हो जाएगा ये। और इनको हमने डेरिवेटिव से बाहर रखा है क्योंकि ये कांस्टेंट है। नंबर ऑफ टर्न्स दोनों ही साइड्स में कांस्टेंट है, एरिया जो है वो भी कांस्टेंट है। जो केवल क्वांटिटी वेरी कर रही है वो है मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे हम ई सब एस निकाल लेंगे माइनस एन सब एस ए डी पी बाई डी टी। उसके बाद हम जो है इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन सपोज इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो हम इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 1 ये सॉल्व करेंगे। यहाँ से ई सब एस अपॉन ई सब पी की वैल्यू आ जाएगी हमारी एन सब एस अपॉन एन सब पी। यहाँ पे अब नंबर ऑफ टर्न्स में अगर हम देखें, अगर डिफरेंस है तो उसके अकॉर्डिंगली दो टाइप के ट्रांसफार्मर हो जाते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी साइड में ज़्यादा है प्राइमरी कंपैरिजन में, तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी साइड में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी साइड, तो ऐसा ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। उसके बाद हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है करंट के रेशो के लिए इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड द ईएमएफ आल्सो। तो यहाँ पे हमें पता है कि पावर जो है इनपुट साइड की और आउटपुट साइड की वो सेम रहती है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर, एंड पावर इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। पावर वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है। तो इनपुट साइड की प्राइमरी साइड की वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय प्राइमरी साइड की करंट इज इक्वल टू द सेकेंडरी साइड वोल्टेज एंड सेकेंडरी साइड की करंट। इनके प्रोडक्ट को हमने बराबर रख दिया। यहाँ से रेशो निकाल लेंगे हम ई सब एस अपॉन ई सब पी का, जो बराबर आ जाएगा आई सब पी अपॉन आई सब एस के, जो कि हमारा ई सब एस अपॉन ई सब पी हम पहले निकाल चुके हैं, एन सब एस अपॉन एन सब पी वो हम वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ इस तरह से हमें एक रिलेशनशिप, जनरलाइज रिलेशनशिप इन तीनों के बीच में मिल जाएगा। यही डेरिवेशन हमें जो है करना था। होप आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।